Hello guys, welcome back to another video. Today we are going to discuss about the nightclub bouncer job and also the security guard job. So we'll be see what is the difference between the nightclub bouncer and also security guard. The issue is many people still confused. They are still asking me again and again this question: what is pay security guard and how to get the security guard visa, and also the what is job security guard. And same issue with the some bouncer. They are confused about the height, about the weight, about the chest size and muscle size. So we'll be discuss today about this topic. So if you new in this channel, just subscribe this channel and touch the bell icon for your future content. If you want to get the free education, free knowledge, free training, so you can subscribe this channel and join us. If you take decision today to stay with us, if you enroll in this channel to yourself, so I promise you, you are going to very good decision, because this channel will be give you a lot of opportunity to how to improve yourself, how to start your business, how to can make your own visa, how you can do the bouncer job if you do not have knowledge, if you do not have experience, if you do not have any kind of education about the bouncer job, about the security guard job. And if you are continue with us, and many people are asking me same question about the size of muscle, chest, and also they are still confused about the height and weight. So will be discussed right now. So if you want to go to the deeply, if you want to take the more information deeply, you can check our the older video like the 1 month ago. So we did give you the lot of videos about this topic. And let me clear to you, I am getting this question also. Many people are asking me where we can get the training. When I said you this is free training, it means we make the free training, free video for you. You can check the videos. This is enough for you. No need to go any the office, any training center and get the training. No. If you in your country, I know, buy your own visa. And if you don't want to buy your own visa, come on the bouncer job, and you need to training only 1 day from the security department, Sira department in Dubai. So that is enough. So for your the experience, for your more knowledge, for your more training, you can stay with us in this channel and get the many videos about this topic. सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने बाउंसर के बारे में बात करनी है। बाउंसर की जॉब किस तरह की है और इसकी पे किस तरह की है, पे की जो प्राइस है वो कितनी है, घंटे की कितनी है, मंथली कितनी है, और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्या है, और दोनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्टिल आ रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा टॉपिक था वो कुछ और था जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैंने इस वीक में बहुत ज़्यादा रिसीव किए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर बात करें, दूसरे टॉपिक को स्किप करें और इसके ऊपर बात करें, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं और बहुत से जो एजेंट लोग हैं, एजेंसी वाले लोग हैं, वो कुछ ड्रामा कर रहे हैं कुछ नए लोगों के साथ जिनको एक्सपीरियंस नहीं है या जिनको इस जॉब का इतना नॉलेज नहीं है, जो लोग अभी नए नए दुबई में आना चाहते हैं। तो लेट मी क्लियर टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट बाउंसर जॉब। अ बाउंसर जॉब this is right. You need the good body, you need the big chest, big muscle. But let me clear to you, don't confuse and don't try to kill yourself on this point. You are not big, you are not tall, and you don't have big body, you don't have big chest, big muscle. No. 5 fingers are not equal. I was give you the many time this example. 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, और ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आप किसी भी अदारे में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, हर बंदा एक अच्छा काम नहीं कर रहा। कुछ ऊपर भी होते हैं, कुछ नीचे भी होते हैं, कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ मीडियम कर रहा है, कुछ डाउन कर रहा है। इस तरह इस डिपार्टमेंट में भी सब लोग बड़ी बॉडी वाले, बड़ी चेस्ट वाले, बड़े मसल वाले नहीं है। सिस्टम चलता है।
मिक्स सिस्टम चलाना पड़ता है हर डिपार्टमेंट को। कोई भी डिपार्टमेंट 100% परफेक्ट काम नहीं करता और ना ही 100% परफेक्ट वो बाउंसर चूज कर सकता है। I was give you the many example in my older video. If you check on my older video, you will be satisfied. But let me clear to you right now. Before like 10 to 8 years, that moment, that time, you are the right. That time that time is required for the big body, big muscle, because that time they are the companies and the nightclub, they are paying the lot of money to the bouncer. But right now, that everything is expensive, but they did not increase the payment, the salary, like the hour price, like the monthly salary. They did not increase. That's why many bouncers, they don't want to come as a nightclub bouncer. That if many people are making the big body in gym, but they are not interested to come in this field. This is issue because they are investing a lot of money on the body. They're making the big body. They are investing a lot of money because the fee and also the food. So this department for the gym department need a lot of money to make big body. That's why the issue is the price is same, still 40 to 30. Right now, if you look the everything expensive, the club and also company have to increase the price. Per hour price should be 60 to 70, but they didn't increase. That's why this system in this department, in this industry, the mostly bouncer, they are not interested. That's why I don't want to come. This is only a big issue. That's why the medium type of body people are just joining this field like freelancer. They're making their own visa. They're doing this job as a freelancer. They're doing the events. They're doing the nightclub, and also they're doing the part-time job somewhere else. So they're making this type of money. If you look in your own country, everything is expensive. If you belong to the Africa, if you belong to India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, anywhere, everything is expensive. The price is gone up, but the salary system is same. So that's why people still confused, still asking, but don't scare if you don't have good body, if you do not have big muscle, don't worry about that. Just come and do this job. Many people are doing. I saw that many people they have the height like 5 foot 5 inch, 6 inch. They are doing the bouncer job. They're making the money per hour 30 to 35. This is only reason people are not going to gym and making a big body because they need lot of money for that. So that's the reason many freelancer, many the free Azad visa people are working in this industry right now. So if you're interested, if you want to come the nightclub bouncer, so you have to come by your own visa and come and do your job. So price is 30 to 35. If you new, maybe 25 to 20. Okay. So let's come to discuss about the security guard job. Security guard job need the only the education like 10 class pass, and there is no required for size like height, like big body. There nothing. Only depend from the government. Nothing anything special. If any company requires, they have their own policy, the company policy, but from the government, nothing. Nothing, anything special. You just need to pass the SIRA certificate only, SIRA course. That's enough for the government. And the pay is monthly security guard, 1200 something. But the basic, that only the 8 hour. And the overtime, like the police loans, so your salary will become around 2000, 200 something. And company will be provide you accommodation, transportation. Sometimes they're providing the medical and also they're giving you the 2 month your the 2 month like vacation. So they will pay you also in that 2 month. So vacation after 2 year, 2 month.
and also they will pay you, but some companies they have the different kind of rule. So the from government no kind of rule about this issue. Only government have the only uh, main decision they took the only about the salary and duty hours. So if you're doing the 8-hour duty, uh, 1200 your basic salary, and after loans will come some sira allowance and some the overtime, so your total salary will become 2200 something per month, and 1 month 4 off, weekly 1 off. And if you come as a nightclub bouncer, if any club will be give you the visa as a bouncer, so they will be give you the money like the salary. If if you don't have experience, maybe 3500, and maybe the 4000 something only. So if you do have experience, maybe they will increase your salary 4500, but including your the transportation, your accommodation, that's only up to you. They will just pay you. Okay, so that's why I'm asking to people to buy your own visa and come to Dubai and make your license and do your job as a freelancer. That's the best for you guys. अगर आप दुबई में आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना खुद का आज़ाद वीज़ा लो, आज़ाद वीज़े पे आके आप काम करो, उसमें आपका जो प्राइस है वो भी आप अच्छे तरीके से ले सकते हो, 30 दिरहम, 25 दिरहम। और इसमें ये है कि जो मर्जी आप क्लब चूज़ करना चाहो उसके साथ काम कर सकते हो, जो आपको अच्छा पे करता है, जो मैनेजमेंट आपको अच्छी लगती है, जिनके कामों को आपको अच्छा लगता है, या जो कंपनी आपको अच्छी लगती है उनके साथ काम करो जो आपको अच्छा पे करती है। तो इसमें आप फ्री होते हो, आप चाहे बाइक का लाइसेंस लो, कार का लाइसेंस लो, चाहे आप कोई और डिप्लोमा करना चाहो तो आप फ्री होते हो। आज़ाद वीज़े का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि बंदा फ्री होता है। तो अगर आप किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े पे आते हो या बाउंसर वीज़े पे आते हो तो फिर आप 2 साल के लिए आप उधर स्टक हो जाते हो, आप उधर से वो कंपनी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट है वो 2 ईयर का होता है, 2 साल आपने कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद फिर ही आप कंपनी चेंज कर सकते हो या आप वीज़ा चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इशू है। बहुत से लोग स्टिल कंफ्यूज हैं कि हम रात को क्लब काम करें, दिन को इवेंट काम करें, तो ये किस तरह मुमकिन है, ये किस तरह हो सकता है। तो मेरे भाई बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं। जब आप इधर दुबई में आओगे तो आपको पता चलेगा सिस्टम किस तरह चलता है, क्योंकि दूर से बैठ के देखना कुछ और है, जब आप फिजिकल आके काम करते हो तो आपको कुछ और ही नज़र आता है, फिर सब कुछ आपके सामने क्लियर होके आ जाता है। तो ड्यूटी क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे होती है, तो उसके बाद आप इवेंट में काम कर सकते हो। इवेंट की ड्यूटी जो है वो 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा हो सकती है। जितने घंटे आप काम करोगे उतने आपको प्राइस उसकी जो है वो सैलरी मिलेगी, उतनी उसकी प्राइस आपके साथ डिस्कस की जाएगी। सम टाइम ये होता है कि अगर कोई कंपनी आपको 1 महीने का 15 दिन का काम देती है तो फिर आपके साथ वो एक एग्रीमेंट कर लेती है, मसलन आपको एक पैकेज बना के दे देते हैं, उसमें हो सकता है आपकी जो है वो 20 दिरहम हो प्राइस। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर जिसके साथ आप काम करोगे, और आपके काम के ऊपर डिपेंड है आप किस तरह का उनके साथ काम करते हो, किस तरह उनको सेटिस्फाई करते हो। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी का कोई इशू नहीं है कि आपकी बॉडी कितनी है, आपका मसल कितना है, ये देसी टोटके पुराने हो गए हैं। ये अपनी कंट्री में चलते थे, पाकिस्तान में, इंडिया में ये बंदे की हाइट अच्छी है, इनकी इसकी मूछें अच्छी हैं, इसकी लुक अच्छी है, थोड़ी दहशत नजर आते हैं, ये पुराना तरीका हो गया मेरे भाई, इसको चेंज करो। अभी दुनिया अपडेट है, अभी आप यूरोप में जाओ तो यूरोप में सिस्टम यही है। ये अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया, अभी सब लोगों को काम चाहिए, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो बढ़ गई हैं, इसलिए एक बड़ा बॉडी वाला बंदा हायर करना किसी भी क्लब के लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि जिसने इतनी मेहनत करके बॉडी बनाई होती है तो वो 20-30 दिरहम के ऊपर या 35 दिरहम के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि उसने अकोमोडेशन भी खुद अरेंज करनी है, ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करनी है, फिर उसने 5-6 घंटा अगर क्लब में काम करना है तो उसमें आपको उसको कितना मिलेगा, फिर उसने अपने खर्चा भी निकालना है, घर भी भेजना है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस 70 से 80 दिरहम पर आवर होनी चाहिए अगर उसने बॉडी बनानी है, जिम करनी है। तो इसीलिए अगर क्लब की प्राइस स्टिल वही है आज से जो 5-10 साल पहले थी,
تو اس لیے جو بڑے باڈی والے لوگ ہیں وہ اس کلب یا اس ڈپارٹمنٹ میں آتے نہیں ہیں. پہلے تو بہت لوگ شوق سے باڈی بناتے تھے, جم کرتے تھے. ابھی وہ سسٹم چینج ہو گیا کیونکہ جو سیلری ہے وہ نہیں بڑھ رہی. تو سیلری اگر ہوئے گی, آپ کو انکم آئے گی, تو تبھی آپ اپنی باڈی کے اوپر لگا سکتے ہو, تبھی آپ جم میں جا کے اپنا خرچہ کر سکتے ہو. ایک جم کی فی ہے, ایک نے اپنے ڈائٹ سے اپنا فوڈ ارینج کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سپلیمنٹ لیتے ہو تو اس کا رینج یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے. پھر آپ کو خود کی گاڑی بھی چاہیے. تو اس ڈپارٹمنٹ میں پھر جب بندہ آتا ہے تو اس کی پھر جو ہے وہ سیلری کم از کم 8 سے 9 ہزار درہم منتھلی ہونی چاہیے, تب جا کے وہ ارینج کر سکتا ہے. تو یہی ایشو ہے کہ ابھی زیادہ تر لوگ جو باؤنسر لوگ ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن جو ایوریج ہے وہ بہت کم لوگ جم میں جا رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ پریفر کالج آف لوگ ہیں افریقہ والے, ان کو پریفر کیا جاتا ہے کہ ان کو, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ لوگ زیادہ جم لگاتے ہیں. تو اپنے دیسی لوگ بھی لگاتے ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی باڈی اتنی اچھی نہیں ہے, آپ کام نہیں کر سکتے. یہ آپ کے کام کے اوپر ڈپینڈ ہے, آپ کے ریلیشن کے اوپر ڈپینڈ ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ادھر ہے وہ جو کام کر رہا ہے, اس کو پوچھو کہ جینون صورتحال کیا ہے, وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرو, اس کی انفارمیشن دو تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے پتہ چل سکے. کیونکہ جب عام لوگ بتاتے ہیں تو بندے کنفیوز ہیں, یار یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک باؤنسر کے لیے بڑی باڈی چاہیے, مسل چاہیے, وہ لوگ وہ پورا وہ پھیتا لگا کے چیک کرتے رہتے ہیں ہمارا مسل کتنا ہو گیا, چھاتی کتنی ہوگی. یہ پرانی چیزیں ہو گئی ہیں بھائی. ابھی تو مسل بنانا, چھاتی بنانا کو کام ہی نہیں ہے. ابھی 5-6 مہینے کی گیم ہے. اب جم جوائن کرو, جم میں جاؤ, آپ سپلیمنٹ لگاؤ اور جم اچھا یوز کرو, تو آپ 5-6 مہینے میں جو جتنی مرضی باڈی بنا لو. ابھی ہر بندے کو پتا ہے, پہلے اتنا یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی تھی. ابھی تو آپ کو پتا ہے لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, لڑکے بھی کر رہے ہیں. تو اس ڈزنٹ میٹر, اٹس ناٹ بگ ایشو which country you from and what kind of you body you have, but let me clear to you, this is very important for you guys to understand. Don't think like more small people and more weak people can do the bouncer job. No, like medium body and like big body, but don't think you are too weak, you are very short, and you don't have personality, and you don't have any experience, you don't have any kind of the diploma. So don't want to waste your money, your price for freelancer visa if you want to come نائٹ کلب باؤنسر. کیونکہ آپ بالکل ہی کچھ نہ ہوگے تو پھر بھی آپ کو پریفر نہیں کیا جائے گا. ہاں, میڈیم طبقے کا بندہ ہو یا وہ باڈی بلڈر ہو تو اس کو پریفر کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ بالکل ہی زیرو ہو تو پھر آئی ایم سو سوری گائز, بٹ دس از حقیقت یہی ہے کہ بالکل زیرو کو بندے کو پھر بھی وہ پسند نہیں کرتے, کام نہیں دیتے. تو یہی ہے آج کا. ایکچولی آئی ایم لٹل بٹ سک, سو دیٹس وائی I don't want to give you the lot of information, so soon I will be get very well, so we'll give you the more information. So if you're new in this channel, subscribe, touch the bell icon and share with your friend. If you do have question, so ask us. And اگر آپ زوم کال پر بات کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنا جو ای میل ایڈریس ہے وہ شیئر کیا کرو یا اپنا نمبر شیئر کیا کرو, تاکہ آپ کے ساتھ شیڈول بنایا جائے کال کا, اور آپ اسی ٹائم بھی پھر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنی جو شیڈول کا میٹنگ ہے وہ آپ شیڈول کر سکتے ہو, میٹنگ کال. تو اس کے اوپر پھر ہم بات کر کے جو آپ کے کویسچن ہے وہ کلیئر کریں گے. سی یو نیکسٹ ویڈیو, نیکسٹ ٹائم, بائے بائے.